I could say the thing that everybody should concern about. Thank you very much. She is a great help under her IQSE. She has helped a lot to organize the seminars, her physical presence, physical support, along with the monetary support that the seminar got, and it is the result of that help. Without that, it was not possible to organize this 2-day seminar. Thank you very much for this kind gesture of being a great support, and I really take this opportunity to thank you. Now it's time to listen to Mr. Ranjit Kumar Das. He is the coordinator, RUSA, IDP. He's reader on physics, and I see from the very beginning that he is a man of various talents who you could see all those media persons present here. It is his effort that he has invited everybody to make it a grand, popular event, and I thank him very much. I request him to address this audience on this occasion. Thank you, Prabha. Good morning to everybody present on this august occasion. Esteemed dignitaries on the dais and off the dais, delegates, representatives of print and electronics media, my dear colleagues and dear students. At the outset, I must thank our team leader, esteemed principal sir, not only for encouraging but also for providing all kinds of support for organization of 2-day national conference on vocal for local, organized by Department of English of our college in collaboration with Odisha Sahitya Academy. I am also thankful to Dr. Purbasa Priyadarshini, the convener of this conference, and her team for giving me this opportunity to share my ideas before you, as this is the right platform where every word has a great impact on the minds of the students. I will never try to express my audacity to speak on the theme of the topic, as we are inviting many stalwarts across our states and country to share their ideas before you. As the coordinator of institutional development program of our college, I not only encourage all my friends to organize such type of program, but also provide all kind of support possible in my part. Because this is the right platform where you can judge yourself. What is your present position in the present context? What is the gap? How you will be prepared yourself to reduce that gap? What should be your destination, as you are the best judge to know your strength and weakness. Dear students, there is a saying in our mother language, whether you understand or do not understand, you have to read Gita. Similarly, I may say, many things may go above your head, but
this is the place where you can get the cream of knowledge, as the knowledge is churned here. At last, I most pray and big blessings of Lord Baldev Ji for success of this 2 days seminar. Thank you all. Thank you, Ranjit sir. Thank you very much. Now all your waiting is over. Your anxious face is going to be illuminated with the presence and the talk of the people who are gathering to listen to. Without taking much of your time, it's my privilege to invite a person who's present with us, who in fact doesn't need an introduction, but still that I took the pain of doing that job. A great man, a great professor, very much related to this soil of Kendrapada from his maternal side. You might be know the great poet Bidut Prabha Devi. He is a very befitting and son of a great lady. So this gathering now turns from anticipation to articulation, and words gain meaning when shaped by wisdom. And it gives me immense pleasure to invite such illuminate person who was taking all the pain to come here. He in fact was so eager to come here that he came here yesterday itself, and he's going to be with us for all 2 days, and it's a great pleasure for all of us. I take this opportunity to invite the keynote speaker of this occasion, and of course the chief guest. He's also representing Odisha Sahitya Academy, without whose help this also could not be a successful one. And he is Dr. Sachidananda Mohanty, member of University Grant Commission, National Fellow, Indian Institution of Advanced Studies, former Vice Chancellor, Central University of Odisha. So many things in there to tell about him. So I take this pause here and invite him to take the stage, take the mic, and address the audience. We are very much enlightened and waiting to listen to you, sir. And all your stage is yours. You can take as much of time and address the audience. Am I audible now? Good one. Good morning. The principal of Kendrapada Autonomous College, Professor Santanu Kumar Jana. We have a distinguished guest here, honored guest, Professor Purnachandra Malik, officials of the college, IQAC and other officials, above all the coordinators of this conference, seminar on translation and national seminar on translation, Dr. Purbasha Priyadarshini. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 young ladies out there. They are perhaps the Sutradhar. And I have been a classroom teacher. It is very disrespectful to keep the students standing. So may I earnestly request all of you to sit down wherever you can. We know that you are very important personalities here, but I think you should all sit down wherever you find a place. Because first of all, we are participants, we are scholars, we are not event managers. So I think I would request all of you to kindly take your seat. And this morning, there are 2 unexpected things have happened to me. Please take your seat. And I'll give you a choice to the audience, to the students.
Would you like me to speak in English? Or would you like me to speak in Odia? All of you, the students out there. I know I am a professor of English, but you just heard that my mother, Bidut Prabha Devi, whose centenary is being observed at the state level, belongs to your region, Ali, Natra and Eredanga. So we are bilingual. And if you are not bilingual, if you don't believe in L1 and L2, you can't engage in translation activities. So for me, English is not a marker of status. English is an instrument of knowledge in the post-colonial context. But Odia is very much important. Odia is my mother tongue. And Professor Purnachandra Malik, we have been told, is trying to implement the national education policy. At the heart of the center to the national education policy is the mother tongue education. So I'm proficient in both the languages, in particular because my mother strongly believed in Odia language. I had my education in the Sri Aurobindo International School, but when I went there during the time of the mother, my mother, Bidut Prabha Devi, who had studied up to class 9, told us, you're going to read English and French and foreign languages. We're going to learn swimming, gymnastics, but you must not forget your mother tongue. And I think I really am very proud of this fact, and I would like to dedicate my address today to the memory of my mother, Bidut Prabha Devi. So I want to ask you, which language would you like me to speak? Odia or English? को भाषा रे तुम चाहूच शुणिया मु उभय भाषा रे कहि परिबे मुक्त कंठरे कुह काकु एठी डरिबार नाही बिकॉज फियर हैज टू बी बैनिश्ड फ्रॉम आवर ओन मिडस्ट इटसेल्फ को भाषा रे कहिबे ओडिया रे कहिबे ओडिया रे कहिबे बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक लिविंग टू थिंग्स हैव हैपेंड टू मी प्रथमे इंग्लिश रे कहि कि तपर ओडिया कहिबे वन इज दैट अनएक्सपेक्टेडली आई हैव बीन मेड द हेड ऑफ द ओडिशा साहित्य अकादमी पूर्वाशा I've been made the head of the Odisha Sahitya Academy, who happens to be this, one of my students. Very curious. Another thing, very curious thing that has happened here is that I have been demoted from professorship to doctorship. Purvasha, all of you, I have been demoted from professorship to doctorship. ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହାର୍ଡ ଅନ୍ କରିକି professor ହେଇଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ doctor କରିଦେଲେ professorship ରୁ be welcome. What is in a name, Shakespeare said. The rose will smell equally sweet. तो डॉक्टर हो कि प्रोफेसर हो जहाँ भी हो मोर मुख्य परिचय है मु सच्चिदानंद महांती आ मु जने ओडिया तेना हूँ मोर मुख्य परिचय ये जो ऑडियंस रे समस्त पिन ड्रॉप साइलेंस से जदि शुणिबे तार मुख्य एबिलिटी हूँ जड़े स्पीकर कर जड़े जदि वक्ता गोटे डेडिकेटेड है न कहे आउ जड़े जदि वक्ता से जो पल्स ऑफ द ऑडियंस न बुझी पारे से केबेले सफल हो पारे आपण मैंने देखु बर्तमान समस्त काम छाड़ी मंचर जो मैंने अच्छा आउ तले बस समस्त एकाग्र हो मो मुख चाहते मु कौन कहबी मु आपन को 10टी पॉइंट कहवाई चाहे मु इंग्राजी कही पारि थांती मोर लाइवलीहुड मु अर्न करछि इंग्राजी कहीकि किंतु जेपरी कहे मु इंग्राजी होछि मोर गोटे लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन किंतु लैंग्वेज ऑफ श्रद्धा जोटा कहते सेटा होछि मोर ओडिया तेना मु ओडिया रे कहछि मु आपन को 10टी पॉइंट कहबी आमर जो वोकल फॉर लोकल हेछि किछि वर्ष तळे कुहा गला टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली आमे आंतर्जातिक स्तर में चिंता करिबा आउ आमर जो लोकल नीड्स अच्छी आमे ता विषय रे कथार्ता करिबा गोटे स्लोगान दिया गला टू थिंक ग्लोबली एंड टू एक्ट लोकली एठी आमे देखिलु पूर्वाशा आउ तांको बंधु माने गोटे स्लोगान देइचंती वोकल फॉर लोकल आमे केमति स्वर उत्तोलन करिबा आमर लोकल पई किपरि स्वर उत्तोलन करिबा मु भाबुची दुईटी स्लोगान रो महत्व अछि जेमती आमे थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली जो जागतिकरण होइछि जो अमेरिकन जागतिकरण होइछि आमे से जागतिकरण को विश्वास न करिकी आमे आमर जो प्रकार जो परंपरा अच्छी आमे ता विषय केमती बुझीबा सेटा होछि वोकल फॉर लोकल तेणु मु आपन को 8टी आपन को 10टी पॉइंट कहिबी आपन जदि एकाग्र होई कि 10टी पॉइंट बुझी परिबे
ताले मु भाबी मोर वक्तव्य सफल है नचेत पूर्वाशा कन्या प्रतिमा पूर्वाशा मो जहाँ खर्च करचंती मु केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज को फेरी देबी आपण देखंतु 10टी पॉइंट मु जहाँ कहबी एपण देखंतु जो प्रकार गोटे स्मॉल ह्यूमर हैला आ मु जेमती आपन को एकाग्रता करके शुणुली आपण जेमती अर्जुन लाइक शुणुले एते पांडव थिले किंतु द्रौपदी अर्जुन को वरण कले कहीं अर्जुन तल को अनेक ऊपर को जो तीरटी मारिले से प्रकृति रे अर्जुन जे तेणु अर्जुन को कृष्ण भगवत गीतार सारथी होगी बुझेले अर्जुन को जो एबिलिटी थिला कॉन्सेंट्रेट करवा क्लासरूम हेले जड़े जदि वक्ता एमती भाव में कहब से मैंने कौन से जिनस बुझेबानी भावनी मुझे मोर कैंटीन को गले कौन हम कैफेटेरिया गले कौन हम से मैंने होगी शुणवे तेणु मु बहुत खुशी बर्तमान आप समस्त चिंता को दूर करके आप मो कथा शुणुंट प्रथम मो स्टेटमेंट गोटे प्रपोजल आपन को दौर प्रपोजिशन सेटा है ये जो अनुवाद आम कहूँ ट्रांसलेशन कहूँ सेटा 1950 मसीहा ठू प्राय आरंभ होता पूर्व आनुष्ठानिक भाव में भारत जिते गणतंत्र है आ से अनुवाद प्रोसेसटा एक्सरसाइजटा आरंभ होला कहीं आम गोटे स्लोगन पाइलु यूनिटी इन डाइवर्सिटी आमर जोटा है प्रथम 1947 मसीह आम स्वाधीन हेलु किंतु आम गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 तार मेजर डिफरेन्स होची आम से आम निजर गोटे सॉवरेनिटी पाइलु सॉवरेनिटी माने आम निज उपरे आमर स्वाधीनता गोटे है सेटा किपरि भाव है सेटा है आमर जो गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तापर आमर जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन है 22 जाक भाषा से 22 भाषा आम देखिलु से 22 भाषा नहीं कि आम से किसी आलोचना कलु आ प्रति थर आम देखापी पाचु से 22 भाषा पर माँ बस मो स्थान ग्रहण कर बस जहाँ कहवा अच्छी मोठू अधिका मूल्यवान नहीं बस 22 भाषा आम शेड्यूल अच्छी 8 शेड्यूल 22 भाषा आउ प्रतिथर देखापी मिलूँ जो भाषा गुड़ाक आम नाला कोंकणी भाषा एमती है तार रिटन स्क्रिप्ट नाला गोआ स्पीक रही अधिकतर अधिक भाषा आम आम कॉन्स्टिट्यूशन को आसूची मु भावुची एटा गोटे भल लक्षण आम मन जो गोटे एरोगेंस थिला एटा हूँ गोटे डायलेक्ट खोर्धार जोटा कहते प्रकृत ओडिया अन्य गोटे ओडिया बलांगीर नुह सेटा भूल अ डायलेक्ट अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज बैक्ड बाय एन आर्मी एंड अ नेवी जो भाषार गोटे पॉलिटिकल पावर गोटे बैकिंग थाए सेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुए यहाँ आम शिखिलु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस जाइए स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन डायलेक्ट कौन आपन ओडिशा रे देखिबे प्रति 10 किलोमीटर गोटे गोटे भाषा सृष्टि होछि ए जो आम जो ट्रांसलेशन उपर आम एक्सरसाइज करूँ प्रथम कथा आम शुणा प्रत्येक डायलेक्ट को आम सम्मान दबा नॉट सो कॉल्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना प्रति भाषा हूँ गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज आ जो भाषार गोटे पॉलिटिकल पावर बैकिंग थी आर्मी नेवी रे तो से गोटे अकस्मात आर्टिफिशियली गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाए तेणु आमको कहगला साहित्य एकेडमी कहगला नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर इंडिया स्पीक्स इन मेनी लैंग्वेजेस आ गोटे स्लोगन दिगला जमती पूर्वाशा ये गोटे स्लोगन देले वोकल फॉर लोकल तार नूतनत्व अच्छी एंड टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली तार नूतनत्व अच्छी आम गोटे नूतनत्व दिगला जे आमर भारतर स्वाधीनता पर गणतंत्र दिवस पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कारण आम भारत हूँ क्वाजाई फेडरल देश एथिपाई हमको पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हवा दरकार नहीं कि हमको रॉकेट साइंस जानिबा दरकार नहीं साधारण कथा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कारण भारत जिते निजर यूनिटी की एस्टाब्लिश करने चाहूला विदेशी शक्ति माने थिले से कहगला यूनिटी इन डाइवर्सिटी सेटा डाइवर्सिटी इन वननेस नुह किंतु समय आसी आमर यूनिटी की आम उपभोग आम रियलाइज करके आम डाइवर्सिटी जोटा अच्छी आम भय न करके से डाइवर्सिटी मान को किपरि भाव में सम्मान दबा आम पश्चिम ओडिशा आम दक्षिण ओडिशा आम पूर्व ओडिशा जो भाषा गुड़ाक अच्छी तमें ताकू किपरि भाव में यथेष्ट भाव में सम्मान दबा मु भावुची आमर भाषा भित्तिक जो प्रदेशटी अच्छी आमर जो सांताली भाषा अच्छी अन्य भाषा गुड़ा अच्छी आम यथेष्ट भाव में सम्मान दे पारूँ
तेणु मूल लक्ष्य है आम जदि अनुवाद विषय आम किसी आलोचना करने जाऊँ आमको प्रथम देखापी पड़ो आम सब भाषा आ सब डायलेक्ट मान को आम सम्मान दबा मुझे कहली प्रति 10 किलोमीटर गोटे गोटे भाषा अच्छी डायलेक्ट अच्छी आ से भाषा गुड़ाक धीरे धीरे लोप पाई जाऊँच लोप कहीं पाचे सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी होटा दूर हो जाऊँच आम केमती सेंट्रलाइजेशन को दूर करके आम भाषा गुड़ाक किपरि बाकिबा सेटा होची कथा आम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किपरि भाव में अवस्थापना आम करवा सेटा होची गोटे कथा मु द्वितीय पॉइंट को आसछि मु कहिथिली आपन को मु 10टी पॉइंट कहबी तापर मु निज प्लेस को नेबी निज स्थान को जीवी द्वितीय कथा होची जे आमे जो अनुवाद जो एक्टिविटी करूछु सेगुड़ा को अनेक भाव में कॉम्प्लिकेटेड होची काहे कॉम्प्लिकेटेड होची अनुवाद कहीं कॉम्प्लिकेटेड होची आपण शुणु अनुवाद कहीं कॉम्प्लिकेटेड होची अनुवाद कॉम्प्लिकेटेड होची कारण आम गोटे पोस्ट कॉलोनियल लिविंग करुछु पोस्ट कॉलोनियलिज्म कौन जितेबाला कॉलोनियलिज्म बाद हो गला ब्रिटिश माने आम देश छाड़ी चली गले आम भाविलु आम स्वाधीन हो किंतु जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज माने कहते एडवर्ड साइद हेले होमी भाभा हेले से माने कहते गोटे राष्ट्र स्वाधीन हो गला परे तांको स्वाधीन चिंताधारा आसेनी से पराधीन चिंताधारा आम भितर थाए जमती आम भावुचु इंग्राजी जदि आम कहबू ताले भल हम तेणु फकीरमोहन लिखिले डाक मुंशी से ताको इंग्राजी पढ़ेकी तापर से ताको इंग्राजी घुसी मारिला कारण से इंग्राजी पढ़ेले इंग्राजी आम पाई गोटे मार्कर ऑफ स्टेटस है आम इंग्राजी भाषा रे कहले लोक मैंने भावे मु कन्वेंट स्कूल पढ़ी मत बेसी सम्मान मिलिबो किंतु से कथा जो फकीरमोहन लिखिं आम से कृतदास नुह इंग्राजी कृतदास नुह इंग्राजी इंग्लिश इज एन इंस्ट्रुमेंटालिटी ऑफ नॉलेज तना जो आम भारत को जो मैंने स्वाधीनता देते रवींद्रनाथ टैगोर कहतु श्री अरविंद कहतु सुभाष से मैंने विदेश रे पढ़िले किंतु आम पाई आम स्वाधीनता आनीदेले से मैंने मल्टीलिंगुअलिज्म विश्वास करते मु सेकेंड पॉइंट आपन करुच्ची आम जदि अनुवाद कथा विचार करवा आम मन भितर ए दास प्रथा भाषार दास प्रथा आम दूर करवा से भाषार दास प्रथा आमर दूर होनी मु पॉइंट 8 कि 9 बेलू आपन कहि किपरि भाव में आमर दूर होनी सबू पिला मैंने मत बुझुन तो हाँ करके कहतु हाँ जोरे कहतु बास मत बुझुंट समस्ते आउ सब छाड़ी बुझुं आम मनरू भाषा पाई नहीं गोटे दास प्रथा दूर दूर हवा उचित आम जदि भाषा आम अनुवाद करवा अनुवाद हूँ L1 आउ जो भाषा आम अनुवाद करवा सेटा हूँ L2 L1 हूँ नेटिव टंग आउ L2 हूँ इंग्रेजी बा जेकोसी गोटे फॉरेन लैंग्वेजेस आम अधिकांश समय L1 को सम्मान दौनु आम मु भावुची जो मैंने ट्रांसलेशन थ्योरीज मैंने अच्छा से मैंने कहते प्रथम भाषा जो भाषारू सोर्स लैंग्वेज को आम यथेष्ट भाव में सम्मान देवा उचित आम टार्गेट लैंग्वेज को दूर करुँ यार इम्प्लिकेशन कौन है मु 8 कि 9 पॉइंट रे आपण मान को आगे कहि तेणु बहुत किसी कॉम्प्लिकेशन होचे गोटे है आमर इनहेरिटेड पास्ट आमर बहुत किसी रिच इनहेरिटेड पास्ट अच्छी ये इनहेरिटेड पास्ट को आम किपरि भाव में डील करवा आमर आइडेंटिटी फॉर्मेशन रे सेटा होची बड़ कथा आमको देखिया पड़ो आमर ओडिशा रे जो इनहेरिटेड पास्ट अच्छी एठू किछि दिन पर किछि बाट गला परे एठी पडुची मधुसूदन दास कर जो घर पड़ुछि आम ताकू सम्मान करुछु कारण से उत्कल सम्मेलन माध्यम सी ताकू गोटे ओडिशा को स्थापन करथिले ताको मृत्यु पर 1936 रे हला आमर जो पिला माने अछंती ए जो पिला माने एठी अछंती समस्त कोन मधुसूदन दास कर उत्कल सम्मेलन जानिचंती मु भाबुछि जेते अन्यर ओडिशा जो नौक दुर्भिक्ष हो आउ आमर बलराम दास हंतु समस्त सांगे आम उत्कल सम्मेलन विषय जाना उचित तेणु मो पूर्वाशा और कलिग्स मान को समस्त आह्वान करुच्ची ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास आपण पढ़ातु ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास जदि आपण न पढ़े आपणकर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज अपूर्ण हो तेणु यही जो प्रकार कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नहीं कि आम सृष्टि करुचु आमर मॉडर्न आइडेंटिटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड रिच आइडेंटिटी मोर सेकेंड पॉइंट है आम से प्रकार आइडेंटिटी को पुणी थे प्रोफेसर जेना आम केमती आविष्कार करूँ आपण मैंने बसिकी जो झील मैंने अच्छा विद्युत प्रभा देवी कि पूर्ण प्रभा देवी को जानी ना
आपण मैंने ये बसिक निरदष्टा कि शुणुंट जो जगार विद्युत प्रभा देवी जन्म होते आ पिता निमय चरण दास किछि दिन पर आपण मैंने ये बसिकी जदि गोटे केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज अच्छा विशेष करके नारी मैंने से अति दुखर कथा आपण मैंने जानतु विद्युत प्रभा देवी किए थे आमे भावुँ आम जदि कॉफी कैफे डेट जा कही बसीगले आमर गोटे स्टेटस बदलीगला आम विद्युत प्रभा देवी विषय जानवा दरकार नहीं कि आम आमर जो मधुसूदन दास अच्छा कि कुंतला कुमारी अच्छा विषय जानवा उचित नुह बंधुगण जानतु जे मु इंग्राजी ओडिया और फरासी भाषा में शिक्षा लाभ करी मु फुलब्राइट स्कॉलरशिप पाई द्वितीय थर जाइए किंतु मु आपन को जो कथा कहूँ मातृभाषा शिखा आमर जो परंपरा अच्छी आम ताकू शिखा से जिनसा जदि न था मु जड़े ओडिया हिसाब से ये ठिया होकर कहबार मोर कौन यथार्थ ना तेणु आमको आमर जो पुराणा आम पुरातन जो प्रकार अच्छी जो विषय आम जानूँ आमर जो किचकबद्ध है जहाँ भी है आम ताकू आविष्कार करने पड़ो यहीटा है मोर कहबार तृतीय कथा है आमर रिच आउ प्लूरल आउ डाइवर्स कल्चर अच्छी ओडिशार जो मान कथा सब कहली आपण मैंने हुए तो कुंतला कुमारी को शेफाली प्रति पढ़ी छड़ा आउ किसी जानी ना आपण मान रेबा राय आउ साधुचरण राय को आपको जना ना आपन को विद्युत प्रभा देवी पूर्ण प्रभा देवी स्वर्ण प्रभा देवी जे लिखिं भासीजारे कागज डंगा विषय जाना ना आम जदि बसिकी ये अनुवाद उपर आलोचना करवा L1 विषय किसी धारणा ना ताले आमर UGC सेमिनार हो कि जेकोसी इंटरनेशनल सेमिनार हो तार लक्ष्य परिवर्तन हो पारबनी तेणु ये जो प्रोफेसर जेना अच्छा मुझे माध्यम ये आह्वान करुच्ची आपण मैंने आम प्राचीन आमर जो लेखा अच्छी ता विषय आप जानतु ताकू जानापे सबू सब्जेक्ट रे आपण बेनिफिटेड हे आपण को इकोनॉमिक्स हो आपण को कॉमर्स हो आपण को फिलोसफी हो आपण जानिछंती जे फकीर मोहन सेनापति जे थिले आम लेखक तांकर पुओ थिले मोहिन मोहन सेनापति से फिलोसफी प्रोफेसर थिले आपण कोन जानिछंती मोहिन मोहन सेनापति जने रेप्यूटेड फिलोसफर थिले से रेवेन्सा कॉलेज रे मध्य थिले आपण माने ओडिशार ऐतिह्य आपण अनुवाद करंतु ओडिशार ऐतिह्य में आमर खाली राजनीतिक माने देबेनी आपण को छात्र आ अध्यापक माने ओडिशार ऐतिह्य को आपण आविष्कार करिवे ओडिशार नौवाणिज्य परंपरा मध्य आविष्कार करिवे आपण जदि देखुचंदी वर्तमान ओडिशार नौवाणिज्य परंपरा राजाराणी मंदिर रे खोदैते है कि अछि मु आह्वान करछि जे आपण माने ओडिशार ओ परंपरा को आविष्कार करंतु जदि आपण अनुवाद करिया पई चाहंती वर्तमान मु चतुर्थ पॉइंट आपण को कहूछि चतुर्थ पॉइंट कहली आपन को देखंतु मु दुईटा आपन को इंट्रोड्यूस करी खूब कॉम्प्लेक्स आइडिया मु इंट्रोड्यूस करुच्ची आपण माने सुनिबे मत देलमा पानी टिके दियो दुईटा आपन कहूँ जड़े ट्रांसलेशन थ्योरिस्ट हेले आम अनुवाद क्षेत्र में आम दुईटी जिनस देखू जड़े हेले ट्रांसलेशन थ्योरिस्ट आउ जड़े हेले ट्रांसलेशन प्रैक्टिशनर आम जड़े थ्योरिस्ट कहूँ के जन कहे आमको किसी थ्योरी दरकार नहीं अरे दौड़ा कथा तो दौड़िली दौड़ापी स्पोर्ट्स थ्योरी कौन दरकार किंतु जो मैंने एडवांस स्पोर्ट्स करुँच से मैंने कहले स्पोर्ट्स जमी फिलिपिडिस दौड़ला ओलंपिक रे दौड़ला फिलिपिडिस ग्रीस दौड़ की 22 किलोमीटर ओलंपिक दौड़ की कहला जे आम दीची जाइछु एथेन्स आउ स्पार्टार युद्ध होता फिलिपिडिस को पठेले से प्रथम ओलंपिक दौड़ की जाकि 22 किलोमीटर कहला एथेन्स दीची जाइए स्पार्टा ठू तेणु आम ओलंपिक थ्योरी किसी अच्छे तेणु किसी लोक कहते आम से थ्योरी बकवास कथा आम विश्वास करूँ आम खाली थ्योरी आम प्रैक्टिस करुँ आम खाली अनुवाद करुँ किंतु बंधुगण मु कहूँ जे आमर जो प्रैक्टिस होउची अनुवाद प्रैक्टिस इट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय थ्योरी आवर चॉइस फॉर मैरिज एंड नॉन मैरिज शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय द क्वेश्चन ऑफ पेट्रियार्की एंड मैरिज आमको इन्फॉर्मेशन दरकार आमको थ्योरी दरकार से जो जड़े लॉरेंस विनुती अच्छा तांको विषय मु दीपद कहि से दुईटी इंट्रोड्यूस कले जो मैंने किसी चली जाऊँच भल आमको जो मैंने इंटरेस्टेड श्रोता से मैंने ही रे जो मैंने जाऊँच अति भल कथा आम 10 जन जब भी रे सेटा सफल हम कारण आम ये क्यूरियस स्पेक्टाकल चाहूँ जो मैंने प्रकृति में इंटरेस्टेड से मैंने रे लॉरेंस विनुटी दुईटी कथा कहले आप देखु गोटे कहले गोटे फॉरेनाइजेशन कले आ गोटे नेटिवाइजेशन कथा कहले डोमेस्टिकेशन कथा कहले डोमेस्टिकेशन आ फॉरेनाइजेशन ये जो पंचम प्रोपोजिशन आपन को देली डोमेस्टिकेशन कौन फॉरेनाइजेशन कौन फॉरेनाइजेशन है आम जदि गोटे नेटिव कल्चर आ गोटे विदेशी आम गोटे भाषा को आम अनुवाद करुचु से विदेशी भाषा केमती आम कथा बुझीब जमती आमर गोटे शब्द अच्छी श्रद्धा श्रद्धार कौन सी इंग्लिश इक्विवेलेंट आज्ञा ना प्रोफेसर मल्लिक श्रद्धार गोटे शब्द ना श्रद्धा श्रद्धा विच इज नॉट लव श्रद्धा इज नॉट एफेक्शन
जमी आमर गोटे जातीय आमर जो भाषार गोटे मौलिकता अच्छी से मौलिकता जे आमर जो इथोस बा कंटेक्स्ट रे तार कौन गोटे लेक्सिकन आम विदेशी कंटेक्स्ट रे पाइबा नाही तेणु ताकू किपरि भाव में गोटे विदेशी ऑडियंस आगे आम प्रतिपादन करवा सेटा हूँ गोटे कथा कहले फॉरेनाइजेशन आ गोटे होला डोमेस्टिकेशन है विदेशी शब्द गुड़ाक जोटा अच्छी आम भाषा सेटा नाही कारण प्रतिटी शब्द पछरे गोटे चिंताधारा अच्छी से समस्ते कहती जदि गोटे भाषाटा लोप हो जाए से भाषार संस्कृति लोप हो जाए जमती अंडमान निकोबार जरवा भाषाटा लोप हो गला ता पछरे जो गोटे संस्कृति अच्छी से संस्कृति लोप पाई जाए आपण देखंतु वर्तमान अमेरिका रे द्रुत गति रे स्पेनिश लैंग्वेज बढ़ी चली आ दक्षिण अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका जोटा है ग्वाटेमाला हंडुरास आउ निकारागुआ एथिरे मध्य स्पेनिश बढ़ी चली दक्षिण अमेरिका रे गोटे भाषा अच्छी जोटा स्पेनिश नुह सेटा होची ब्राजिल आउ सेठी पोर्टुगीज कारण जिते क्रिस्टोफर कोलंबस आसिले आविष्कार तथाकथित आविष्कार कले से स्पेनिश भाषा को लेकिन आसिले जहाँफल अनेक गुड़ाक नेटिव अमेरिकन भाषा इंडिजिनस अमेरिकन इंडियन को भाषा गुड़ाक लोप पाईगला यहाँ कौन लोप पाइबा उचित आम जदि डेमोक्रेटिक लिविंग रे विश्वास करूँ भाषा लोप पाइबा उचित नुह मु पूर्व कही आमर सबू डायलेक्ट गुड़ाक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आ सबू डायलेक्ट को आम आविष्कार करवा उचित आम जदि अनुवाद करवा खाली आम ओडिया आ इंग्राजी माध्यम अनुवाद करवा मु भावुची आम लक्ष्य साधन करें तेणु क्रिस्टोफर कोलंबस जो प्रकार करी लोप भाषा को लोप करदे आम चाहूँ से प्रकार कॉलोनाइजेशन न हो तेणु लॉरेंस विनुटी दुईटी कथा कहले गोटे हूँ डोमेस्टिकेशन आ गोटे हूँ फॉरेनाइजेशन आम एटा को किपरि भाव में L1 to L2 कहीपर यहाँ है मोर पंचम प्रपोजिशन मुझे मु 10टी प्रपोजिशन देकी मो स्थान ग्रहण करी तेणु कहार किसी बोर्ड हबार ना मु मूल जहाँ करी रिकास्ट करके आपण मान सांगे मु आगुरी प्रस्तुत हो नी ओडिया कहवाई कि ओडिया मोर गोटे किसी परिमाण मुझे प्रकृत में मातृभक्त होती आउ विद्युत प्रांक भक्त होती आउ ओडिया माँ भक्त होती ताले मु ओडिया निश्चित भाव में कहि आ गोटे कथा मु कहि पंचम कथाटा मु कहि षष्ठ कथा मु कहि आपण मैंने बसिकी आपण भावुंट जे अनुवादटा हूँ गोटे मेजर एक्टिविटी प्रोफेसर जेना अनुवादटा मेजर एक्टिविटी नुह यूरोप और अमेरिका देखा जाए जे जेतिकी तांकर पब्लिकेशन सब होची यूरोप अमेरिका आपण माने भावंतु से माने बहुत एडवांस देश से एडवांस देश में बहुत किसी अनुवाद होउथबो आपण सुनिकी दुखित हेबे अवसोचनार कथा यूरोप अमेरिका रे ट्रांसलेशन होची पब्लिकेशन 2.3 2.3 भाग पब्लिकेशन होची आउ ट्रांसलेशन केते कम से माने एडवांस लैंग्वेजेस इटालियन स्पेनिश ग्रीक इंग्लिश फ्रेंच रशियन केते भाषा सब अच्छी किंतु 2.5 आपण जदि देखिबे 2.3 भागर होची आम भितर आप देखिए आ जो नेक्स्ट पॉइंट रे मु कहिबे आमर अनुवाद जो प्रकार सीन अच्छी लैंडस्केप अच्छी इकोसिस्टम अच्छी केते परिमाण रे ग्रॉसली इनएडिक्वेट आपण कहिबे तेणु मुझे कहवाई चाहे ता पछरे गोटे आह्वान अच्छी आम जदि चाहिए खाली गोटे नेशनल सेमिनार को नुह आमको ग्राउंड रियलिटी की जाकि बुझापी पड़ो आमर ट्रांसलेशन सीन केमती भाव में होपण मैंने सबू निश्चित भाव में अन्य जिनस छाड़ी मंत्रमुग्ध होकर शुणुंट बिकॉज एवरी स्पीच हैज टू बी बॉर्न आउट ऑफ पैशन एंड इंटेलिजेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मुझे गोटे पॉइंट कहूँ आमर जो प्रकार ट्रांसलेशन सीन आम देश में बहुत किसी अवार्ड दि जाऊँगी किंतु प्रकृति में ट्रांसलेशन हूँ इनएडिक्वेट मु आपन को यूरोप अमेरिका कथा कहली 3.2 दशमिक आमर होची तापर देखंतु आमर गोटे पैराडॉक्स माने सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन विलियम ब्लेक जेमती कहले द रोड टू एक्सेस इज द पैलेस टू विजडम कैन अ ल्यूनाटिक पोएट एंड द लवर आर द सेम विलियम ब्लेक कहले तांको गोटे इनसैनिटी तांको गोटे आख्या दिया जायतिला किंतु सी जड़े ग्रेट मिस्टिक थे भीतर जहाँ कहले द रोड टू एक्सेस इज द पैलेस टू विजडम आम बहुत मॉडरेशन हवा उचित से कहले एक्सेस माध्यम जड़े विजडम को लोकेट कर शेक्सपियर जी कहले ल्यूनाटिक लवर एंड द पोएट आम सब कौच पागल आख्या दे पागलटा पागल भितर जो विजडम अच्छी आमको बुझापी आम क्षमता ना तेणु आम बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोक आम पागल बोली विचार करूँ एटा मु कहूनी शेक्सपियर कहले एंटन चेकव कहले वर्ड नंबर 6 रे कहले
गोटे सुस्थ व्यक्ति को गोटे पागलखाना भर्ती कर दि जाऊँगी आ पागल मैंने हसुंट किंतु से सुस्थ व्यक्ति कौची मु प्रकृति जन सुस्थ मस्तिष्कर व्यक्ति रोड टू एक्सेस इज द पैलेस टू विजडम तेणु ये पैराडॉक्स कथा कहली पैराडॉक्सेस आर नॉट कॉन्ट्रडिक्शंस पैराडॉक्सेस आर सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन पैराडॉक्स भितर जो विजडमटा अच्छी आमको बुझापी पड़ो से विजडम भितर मुझे कहवाई चाहूँगी मुझे आपन को इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रांसलेशन कथा कहली मु बर्तमान आपन को पैराडॉक्स कथा कहबी आपन देखंतु ओडिया रो इंग्राजी बहुत कम होछि किंतु बहुत पूर्वर ट्रांसलेशन थ्योरी कहवा पूर्वर ओडिशार जनता माने अन्य भाषारू ओडिया को बहुत सब पढ़ुले प्रोफेसर मल्लिक ओडिया अध्यापना करुले से जन दक्ष ओडिया अध्यापक से मो सांगे राजी हे टम ककांकर कुटीर अंकल टम्स कैबिन आमे एठी ओडिशा रे पढ़ुलु अन्य भाषाभाषी डी.एच. लॉरेंस को हो आउ डिकेन्स को हो अन्य भाषारू रवि ठाकुर को बही हो आमे ताकू ओडिया रे पढ़ुलु किंतु ओडिया को ओडियारू इंग्राजी किंबा अन्य भाषा बहुत बेसी अनुवाद हो नथिला मु भावुची जेहेतु ओडियारू अन्य भाषा को हेई नथिला ओडिया संस्कृति ओडिया आउ साहित्य अन्य भाषा को जाई पार नथिला एई जो भाषा को भित्तिक कहली जेमती कर्णाटकारु हो केरलारू हो से माने रवि ठाकुर को कथा गुड जानी से माने फकीरमोहन सेनापति को कथा जान नथिले मु भावुची एटा गोटे अति शोचनीय कथा जे केरला कर्णाटक आउ महाराष्ट्र जो लोक मैंने से माने तांको भाषा आउ अन्य भाषा मान साहित्य विषय जानुले किंतु आम ओडिया भाषा जानू नथिले तेणु ओडिशार विकास घटो आंचलिक विकास घटो खाली रिसोर्स भितर नुह जो मुहूर्त में साहित्य आ संस्कृतिर विकास घटो मु भावुची ओडिशार विकास घटो मु कौन सी रिसोर्स डेवलपमेंट विकास पाई मु विरोधी नुह विरोध हो कल कारखाना हो पारादीप पोर्ट आउ एक्सपेंशन हो धामरार हो आउ कल कारखाना हो बिल्डिंग हो यूनिवर्सिटी सब हो ता सहित मु कहिबी मुक्त कंठारे कहिबी ओडिशार प्रकृत विकास घटो आउ स्वाधीन ओडिशा एक आसीबो जदि ओडिशार साहित्य समाज आउ संस्कृतिर विकास घटो तेणु आमको ग्रहण करने पड़ो आउ एटा अनुवाद माध्यम एटा है नहीं पिला माने मु जो कथाटा कहली मु कौन सी मीडिया को लक्ष्य करके कहूनी मु ओडिशार विकास रे बिलीव करे ओडिशार मेटेरियल आउ इकोनॉमिक विकास रे एठी करे एठी इकोनॉमिक्स रो अध्यापक अछंती से माने मते मिसअंडरस्टैंडिंग करिया उचित नो किंतु मु गभीर भाव में मु रियलाइज करे जे प्रकृतिर विकास घटिबो जदि गोटे चेतनार विकास घटे जदि गोटे साहित्यर विकास घटे जदि गोटे सांस्कृतिक विकास घटिबो बंधुगण आमर सांस्कृतिक साहित्यिक विकास घटी ना आम बर्तमान जाए लैंग्वेजेस मान को डायलेक्ट कहूँ आमको अनुवाद माध्यम आम जदि आमर पुनर् जो प्रकार आमर जो प्रकार आम जो परंपरा अच्छी मु जो परंपरा सकाशे कहली आम जब बुझीपर आउ इंग्राजी भाषार दास न हो कि इंग्राजी को इंस्ट्रुमेंटल ऑफ नॉलेज कहवा जमती महात्मा गांधी कहते आई बिलीव इन ओपनिंग माय डोर्स एंड विंडोज टू द वर्ल्ड बट आई रिफ्यूज टू बी स्वेप्ट ऑफ my feet because of the winds of change which are coming from outside अर्थात मु इंग्राजी भाषा मु ग्रहण करी यंग इंडिया लिखी किंतु गुजराती हूँ मोर मातृभाषा गुजराती माध्यम मु लिखी मातृभाषा लिखा मल्टीलिंगुअलिज्म विशेष करवा अनुवाद करवा आउ इंग्राजी फरासी भाषा रे आमे दुनिया सांगरे आमे भाव विनिमय करवा यह हूँ गोटे लक्ष्य तेणु मु जो स्लोगान दौची यही मल्टीलिंगुएज माध्यम आम ताकू आविष्कार करवा तेणु ये जो प्रकार एसिमेट्री होची इनइक्वालिटी होची भाषा भित्तिक विषय इंग्राजी आ ओडिया आ अन्य भाषा आ ओडिया अन्य भाषारू आम शिखीचे किंतु आम ओडिया भाषार जो टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी आम फकीरमोहन हो कि जहाँ भी हो आम ताकू यथेष्ट भाव में अन्य भाषा आम प्रकाश करें मु गोटे आह्वान देवी ये जो मैंने बसचंती से मैंने आम ओडिया भाषार जो टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी बहुमूल्य टेक्स्ट ताकू मत इंग्राजी आउ बेंगली आउ भाषा करंतु कारण लिंग्विस्ट मैंने कहते आउ ट्रांसलेशन थ्योरीज मैंने कहते जे आमे जदि गोटे भारतीय भाषार टेक्स्ट को इंग्राजी करवा तापेक्षा बेटर आम कर भारतीय भाषा टेक्स्ट अन्य भारतीय भाषा को कारण भारतीय भाषार सब जो टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी गोटे कॉमन सेंसिबिलिटी अच्छे लिटरेरी सेंसिबिलिटी जो लिटरेरी सेंसिबिलिटी और विदेशी भाषा सांगे ना भारतीय भाषार तेणु भारतीय भाषा किपरि भाव में अनुवाद करवा सेटा आम देखापी पड़ो बर्तमान आउ बंधुगण मो 2टी पॉइंट कहूँ 9टी पॉइंट 10टी पॉइंट मु कौन डाइग्रेस करनी जहाँ मुझे पूरा संक्षिप्त कहूँ फोकस्ड होगी कहूँ आपण मैंने आग्रह शुणुंट आउ मनी बैक ग्यारंटी मु ऑलरेडी पूर्वाशा को ऑफर कर
दुईटे पॉइंट आपन को कहिबे तापर मु विदाय नेबी। नॉट होची मु आपन को कहिबे आपन जो अनुवाद सब करूचंती अनुवाद पछरे गोटे पॉलिटिक्स अछि। कौन पॉलिटिक्स? मु जदि एई भाषार गोटे टेक्स्टटा अनुवाद करिबे जो व्यक्ति माने अछंती मु ता माध्यम गोटे पुरस्कार पाइबी। मते गोटे लबी दरकार गोटे पुरस्कार पाए पे। आज गोटे साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइली, काली ज्ञानपीठ पाइबी, परदिन नोबेल पाइबी। मु बाबूची गोटे सच्चा जदि कौन गोटे ट्रांसलेटर हेइथिबो जो कथाटा सुजन बासनेट कहिसंती। पिला माने लॉरेंस बिनुटी विषय जमती कहली तुम लिखिल सुजन बासनेट वारिक यूनिवर्सिटी जड़े थिले मोर सौभाग्य थिला तांगु देखा करिया पई। सीए मध्य एथिक्स ऑफ ट्रांसलेशन कहले। एथिक्स कौन? एथिक्स होची हम मोरालिटी। मोरालिटी माने आमर सेटा करबा उचित कि न करबा उचित। मु भाबुची गोटे भल सच्चा ट्रांसलेटर आ अनुवादक माध्यम रे गोटे गोटे रहिबा उचित, गोटे एथिक्स रहिबा उचित। मु एटा करिबी कि न करिबी। आजिकल देखा जाउची अधिकांश सब ट्रांसलेशन होउची कारण एई ट्रांसलेशन टे कले मु ट्रांसलेशन अवार्ड टी पाइबी। मते जे जार ट्रांसलेशन करची सी मते गोटे उपढौकन दब, सी मते देश विदेश रे बुलेइबो। एइटा होची गोटे निम्न चेतनार लक्ष्य। आमे जदि प्रकृत रे ओडिया साहित्य समाज आउ परंपरा रे विश्वास करू जो गुडाक अमूल्य संपत्ति आपण देखंतु आमर अमूल्य संपत्ति कौन? आमर गोपबंधुकर होची तांको लेखा होची अमूल्य संपत्ति। आमर गोदावरी संगर लेखा होची अमूल्य संपत्ति। आमर कुंतला कुमारी का लेखा होची अमूल्य संपत्ति। आमर जो सरला देवी अछंती अमूल्य संपत्ति। आमर विद्युतप्रा देवी अछंती अमूल्य संपत्ति। आमर जो अन्य सब लेखा माने लेखा लिखिचंती सुरेंद्र महांती अमूल्य संपत्ति। मते जड़े कहले मु जेतेबेले विस्मृत परंपरा ओडिया साहित्य रे नारी प्रतिभा लिखिली। आमर इटे सरोज बोतांती सी मध्य मोर छात्र थिले। मु बहुत गर्व फील करछि। सी बर्तमान जामिया मिलिया रे जड़े प्रोफेसर अछन किंतु सी मध्य स्वीकार करिवे मु सबले स्वाधीनचेता ओडिया जड़े थिली। मु कौन से इंग्राजी रो कित्रदास नथिली। मते मु जेतेबेले लिखिली सरोज मते बहुत किछि लोक कहिले तमे ओडिया रे तो जो लोक माने मरि जाइछंती तांको विषय कहीं लिखुछ। लॉस्ट ट्रेडिशन अर्ली विमेन्स राइटिंग इन ओडिशा सेज पब्लिकेशन कला तापर अन्य करूछंती मानुषी पब्लिश कला। आ तमे जो माने जीवंत अछंती तमे लिखुन मुगल कहीं जीवंत सी लिखिबी ना जीवंत लोक मानकु जदि लिखिबो तुम गोटे पुरस्कार मिलिबो। मु कहली किछि पुरस्कार दरकार नहीं। मुल पीर पुरस्कार दरकार नहीं। जेमती मो माँ से विवाह करिया पई चाहू नथिले से साहित्य चर्चा करिया पई चाहूथिले। आ मो माँ को जीवन जिते बाहरला सौम्य रंजन पट्टनायक कहले अति उत्तम कथा विद्युत प्रदेवी विवाह कले। विवाह न करथिले आमे प्रोफेसर महांती की पाई न थांतु। मो समय जिते आसिला मु भाबिली एटा अति दुखर कथा। मु जन्म न होइथिले भी भल ही थांता किंतु जदि मो माँ से इस प्रकार से जो संभावना थिला तांकर से जोटा चाहूथिले ऑप्शन चाहूथिले मु विवाह न करिकी करिबी। बर्तमान से ऑप्शनटा आपण माने पाइचंती से चॉइसटा आपण माने करि पारचंती। झियो माने नारी माने करूचंती। मु भाबुची से समयठू ए समयटा आगेइछि। आपनको भितरे से चॉइसटा अछि तेनो से चॉइसटा को हम करिया पई पड़िबो। जीवनर प्रति घड़ीसंधि मुहूर्त रे चॉइस करिया पई पड़े। अनुवाद को मध्य रे मत गोटे चॉइस थाए। आमे जो माने मरि जाइछंती तांको कथा लिखिबा ना जो माने जीवंत अछंती तांको कथा लिखिके पुरस्कार पाइबा। मु भाबुची हमर जो अमूल्य साहित्य संपत्ति अछि ताको हमको अनुवाद करिया पई पड़िबो। जो लेखक मान को विषय मु कहिली कुंतला कुमारी कर सुफाली प्रति छड़ा आमे किछि जानुनु। विद्युत प्रदेवीकर खद्योतिका माटीरे मनीष जोटा कि आवृत्ति कले जे मुख्यमंत्री बजेट सेशन ने तांको छड़ा आमे किछि जानुनु। मु आ गोटे आह्वान दउछि पूर्वाशा मो कन्या प्रतिभा अनुमान को आगे मु आह्वान दउछि आमर जो पुराना जो सब लेखा सब अच्छी आमर आइकोनिक कैनोनिकल टेक्स्ट गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक सब अवहेलित से टेक्स्ट को आम ये करवा। आउ पूरा शेष में मु 10टी पॉइंट 10 मु कहूँ आपण आगे कली ए बहीटी एटा लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ सरला देवी। एटा मु इंग्राजी मु जो जाकि 15 वर्ष तले घर को जाइली से आमर आत्मसम्य आमर आत्मीय हेबे तांकर जो नातुणीटे थिला भारती कहला सचिवे यार किसी हेनी नड़िया कथा भितर आणिक मत देखला। आ मु देखिली सरला देवी होउछंती कमला देवी चट्टोपाध्याय आ दुर्गाबाई देशमुखर जड़े प्रिजन मेट थिले बेलोर जेल तांको लेखा सब संग्रह करिकी विभिन्न पत्र पत्रिकार कली ओडिसा रे ओडिया रे मध्यम कली। इंग्राजी एटा हला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सबुठु प्रेस्टिजियस मु एथिरे कली। मु कंटेम्परेरी राइटर को लेखिकी कौन से पुरस्कार मोर नथिला मोर अभिप्राय भी नहीं। मो पाई सरला देवी होउछंती श्रेष्ठ
पुतला कुमारी रेबाराय होचन श्रेष्ठ आमर आधुनिक कौन से गोटे स्लोगन पॉलिटिकल स्लोगन ने हुए ऑल रेवोल्यूशंस आर क्रिएटेड फाइनली इन द क्लासरूम ए क्लासरूम रे रेवोल्यूशन हम जो दिन ये साहित्यिक रेवोल्यूशन क्लासरूम रे हम मु भावुची यथार्थ रेवोल्यूशन हम आउ ये बहीटी मु कली आउ सरलादेवी को बहीटा किंडल एडिशन अच्छी और डिजिटल एडिशन अच्छी प्राय 100 वर्ष रु अधिका सरलादेवी जीवंत होकर रहिले आउ जोगुड़ाक आम जदि आंतर्जातिक स्तर में प्रकाश करवा आम ताकू करिपरिबा मु शेषरे आ कहवाई चाहे आम भितर जो एसिमेट्री अच्छी बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आम से एसिमेट्री दूर करवा गोटे भाषा जदि लोप हो जाए गोटे कल्चर लोप हो जाए आउ कल्चर को रखापी हेले जागृत करने भाषा को आमको सेफगार्ड करने पड़ो आउ यही जो स्वाधीनता आमर जो करिचे आम जो ट्रांसलेशन बा अनुवाद गोटे आम सम्मिलन करिचे ये सम्मिलन मध्यम मो कहवा कथा आम जदि 10टी पॉइंट आउ अन्य पॉइंट माने अन्य वक्ता माने कहिबे आम जदि ताकू ध्यान दबा मु भावुची यही जो जातीय सेमिनारटा अच्छी अनुवाद उपरे किछि पार्लियामेंट में एटा सफल हम धन्यवाद। Thank you very much, sir. It was an illuminating session. I have noted down some important points that you discussed about the concerns of translation. First of all, thank you very much for such a deeply engaging and thought-provoking keynote address. Beginning from the emergence of translation in India, your insights illuminated how translation had shaped our multilingual intellectual history. Your concern over the gradual disappearance of regional dialect was especially moving, reminding us that language loss is also a cultural memory. By foregrounding colonialism as the first major threat to translation, you urged us to think and rethink power, language, and responsibility in translation practice today. We are truly grateful for a lecture that was both intellectually enriching and ethically awakening. Thank you, sir, for such an illuminating address that reaffirmed the centrality of translation theory, while also drawing our attention to the multiple threats. And we also apologize to address you, Doctor. You were no doubt a professor. You have, in fact, gone beyond the stage of professor. You are a learned man. No address, no salutation could befit to you. You were above all salutations. So you are not a professor. You are not a doctor. You are a learned man who always illuminates seekers, because you are a learner. So we are all seekers. So you are beyond all salutations. You befit, just your name is enough. I think the professor is not also enough. You go beyond that. Thank you very much. And now, I would, before inviting the next speaker, who is the speaker of this session, I would tell in a nutshell about him. Where thought meets experience, dialogue begins. And he is a thinker whose words travel beyond pages and whose insights open new windows of understanding. We have got multiple opportunities to listen to you over the television, but this is the first time we're going to listen to you face to face. And now you have a great experience in terms of Odia literature. You have written dialogues for 2 movies, 2 very classic movies, and a few theaters or a few theaters, as far as my knowledge goes, you have written also. So such illuminating person is present with us. So I would like to address and request the chief speaker of this occasion, Professor Purnachandra Malik. He is a known person. Many of us know him, but still then he is a very disciple, learner, scholar of Odia literature and playwright. Also the former principal of Panchayat College. I request him to take the mic and enrich the audience present here.
Honorable President, Professor Shantanu Kumar Jena, Principal, Honorable Chief Guest, Dr. Sachidananda Mahanti, Member University Grants Commission, Ministry of Education, Government of India, former Vice Chancellor, Central University of Odisha, Fulbright Fellow, Texas Austin Yale University, United States of America, Fulbright Visiting Professor, United States of America. Professor Dr. Dipti Roy, Dr. Devakant Sodangi, Dr. Ranjit Kumar Das, Dr. Achyutanand Maharana, Shraddheya Purvasha, कंपेरियर अच्छी श्रद्धेया प्रभामयी ये दी जन को आशीर्वाद करुच्ची आम सम्मुखें बस प्रोफेसर रामचंद्र बेहेरा सार को प्रणाम जनाऊँ ओडिया साहित्यर से होती लिविंग लिजेंड प्लीज गिव योर बिग हैंड्स तांका उद्देश्य रे सम्मुखें बस डॉक्टर सरोज रेस्पेक्टेड टीचर्स स्टूडेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स ऑल्सो मुझे बेसी कंफर्टेबल फील करी मुझे ओडिया कहि बहुत समय है बस के पिला माने तुम शुणुच मो विषय जो कहला गोटे नाटकर कथा कहगला पिंगला सहित गोटे राति मुझे नाटक रू दीटा डायलॉग कहीकि तुमको टे वार्म अप करी तापर मो वक्तव्य रखी एकादश स्कंदरे पिंगला बोली गोटे चरित्र अच्छी जदुराज राज्य को जड़े अवधूत से अवधूत प्रचंड ज्ञानी तांको जी जहाँ प्रश्न करुच्ची से तार सठिक उत्तर दौरान तेणु जदुराज जिते शुणिले राज्य को जड़े यही ज्ञानी पुरुष आछंती से ताकू साक्षात करने को चाहिए एवं राजा जाई भेटिले जहाँ प्रश्न कले सुंदर उत्तर पाइले से प्रभावित हेले एवं से पचारिले आपण एते ज्ञानर अधिकारी किपरि हेले अवधूत कहते मोर 24 जन गुरु अच्छंती से 24 गुरुंक ठारू मु शिक्षा लाभ करिछि से गुरुंकर जेतेबेले से दौरान तादरे कहते सूर्य मोर गुरु चंद्र मोर गुरु वायु मोर गुरु इत्यादि इत्यादि कही कही से कहते पिंगला बेश्या मध्य मोर गुरु से तो पिंगला बेश्या कथा कहते अन्य मैंने आश्चर्य स्वाभाविक जड़े बेश्या केमती एभली महान पुरुषंकर गुरु हब तेणु प्रश्न जो उठुची सेठी वर्णना कराऊँच जे श्रीकृष्ण कहते उद्धव को हे उद्धव तू शुण पूर्व काल रे अवंती नगर रे जड़े बेश्या थिला ता ना होची पिंगला से साधव पुरुष सहित मिलित होगापाई कंठ देला एवं रातिर द्वितीय प्रहर स्थिर है से आसब से कहानी से 10 पद गोटे 10 लाइन्स से 10 लाइन को नहीं मोर गोटे क्लासिक नाटक मु लिखी आज की 45-50 वर्ष तले जार ना हूँ पिंगला सहित गोटे राति से जोड़े डायलॉग मुझे खाली आपको कहबी आप शुणिबे डायलॉगटा हूँ एमती रातिर प्रथम प्रहर आसी सूर्य अस्त हो जाती प्रथम प्रहर चलुची पिंगला तांकर सहचरी को कहते एबे राति केते हैला यही तो उत्तर से कहूँ तांकर जी सहचरी यही तो सूर्य अस्त हेले प्रथम प्रहर आरंभ है मात्र
से केतेबेले आसबे से माने साधवपुत्र रातिर द्वितीय प्रहर रे द्वितीय प्रहर केबे हम प्रथम प्रहर पर ये समयटा केड़े धीर मालविका ये समयटा केड़े धीर मालविका मालविका उत्तर दौची हाँ एक वृद्ध कच्छप भली शुणु डायलॉगटा ये समयटा केड़े धीर मालविका मालविका उत्तर दौची हाँ एक वृद्ध कच्छप भली रातिर द्वितीय प्रहर अतिक्रांत होइछि तृतीय प्रहर अतिक्रांत होइछि चतुर्थ प्रहर अतिक्रांत होइछि से आसी नाहांती उद्ग्रीव ही से प्रश्न करुछंती मालविका को पिंगला प्रश्न करुछंती राति एबे केते हला मालविका चतुर्थ प्रहर संपूर्ण हेबा को जाउची झरका खोली देइछि एई तो पूर्व दिगरे सिंदूरा फिटी आसिलानी आ अल्प समय पर सूर्य उदय हेबे पिंगला कहउछंती ये समयटा केड़े चंचल मालविका ये समयटा केड़े चंचल मालविका मालविका उत्तर दौची हाँ एक वेगवान अश्व भली ये समयटा केड़े चंचल मालविका से लोक पचारुची जो प्रश्न करुची जे उत्तर दौची से एका लोक अच्छे से कहूँ ये समयटा केड़े चंचल मालविका से उत्तर दौची हाँ एक वेगवान अश्व भली समयर जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन समयर जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ये समयटा केतबेले आमको लगुच वृद्ध कच्छप भली धीर मंथर गति चलुची केतबेले लगुच वेगवान अश्व भली खूब शीघ्र अतिक्रांत हो जाउछि ये थला से नाटक छड़ मुझे आसबि पिला माने बेसिकली पिला मानक पई कहबी तुम यूरोप मानचित्र देखिथिबो फ्रांस मानचित्र देखिथिबो फ्रांस गोटे पट अछि ग्रेट ब्रिटेन जो माने हमको शासन करुथिले जो माने हमको शासन करुथिले से राज्यर ना होछि ग्रेट ब्रिटेन जहाँ को बिलात बोली कहूँ ता मझिरे अच्छी गोटाए इंग्लिश चैनल से इंग्लिश चैनलटा जो अणोशे हो मिसी जाइए अल्प हो तार दूरत्व हूँ 26 किलोमीटर तार दूरत्व हूँ मात्र 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर एपटे रहिला ग्रेट ब्रिटेन राइट साइड रहिला फ्रांस पिला माने आश्चर्य हम जदि जानिथिबो भल जदि न जानिथिबो जान मात्र 26 किलोमीटर व्यवधान भितर ब्रिटेन ठारू मात्र 26 किलोमीटर किंतु प्रत्येक फ्रांसवासी से माने इंग्रेज कहवाई इंग्राजी भाषा व्यवहार करने घृणाबोध करती से घृणा करती इतिहास माने इंग्राजी कहवाई मात्र 26 किलोमीटर व्यवधान रे दीटा देश कहीं कारण से माने तांकर मातृभाषा को सबुठू बेसी भल पाती 26 किलोमीटर दूर ब्रिटिश थिले मध्य ग्रेट ब्रिटेन थिले मध्य से माने तांको देशर भाषा कहती नहीं जेतेबेले यूरोपर सबु देश पृथ्वीर विभिन्न अंचल को जाई सेठी कॉलोनी तैयारी करथिले सार जो कहते स्पेनिश कॉलोनी मध्य अमेरिकार थिला पोर्तुगीज कॉलोनी मध्य अमेरिकार थिला एकदा समय थिला जेतेबेले पृथ्वीर अर्धाधिक देश पोर्तुगीज कॉलोनी अर्धाधिक स्पेनिश कॉलोनी किंतु इंग्रेज माने कल बल कौशल करी सबुजाक स्पेनिश कॉलोनी सबुजाक पोर्तुगीज कॉलोनी को निज अक्तिआर को नहीं आसले तेणु मु खाली ये कहूँ गोटे प्रश्न करी पिला तुमको आम देश राज्यर ना हूँ ओडिशा आमर भाषा हूँ ओडिया सेमती फ्रांस को जदि आम नवा फ्रांस है देशर ना तांकर लैंग्वेज ना फ्रेंच मते कुह मु सब पिला पचारुची किसी कथबार्ता निज भीतर मो कथा शुण एवं प्रश्नर उत्तर दियो आग ओडिया है ना आग ओडिशा है बुझिपार मो कथा तो आग फ्रांस है ना आग फ्रेंच है बुझिपार मो कथा आग स्पेनिश भाषा है ना स्पेन है
कोटा आग भाषा ना से देश से भूखंड भाषा ठीक कह प्रथम है भाषा भाषा को नहीं से भाषा जो मैंने कहले से माने जो भूखंड रे रहिले से भूखंड को सही भाषा ना रे नामित करागला ओडिया जो मैंने कहले तांको ओडिया कहगला से जोटी रहिले तांको ओडिशा कहगला तेणु भाषा हूँ मूल जो लोक ता निज भाषा को चिन्हनी जानी निज भाषा रे कथा होनी निज भाषा रे कथा होला बेले से हीनमन्यता अनुभव करुची से भली केबे हवा उचित नुह भाषा हूँ आमर माया भाषा हूँ आमर परिचय भाषा हूँ आमर अस्मिता तेणु आम भाषा को नहीं आम बंचिबा आम भाषा पाई आम मरिबा आज जो ट्रांसलेशन होउची तार पर आलोचना होउची मु सब पिला मानकु जणै दवा पई चाहूची जदि न जानि थिबो जान ये अनुवाद करिवार जो प्रैक्टिस ये आजिकालीर नुआ प्रैक्टिस नुह मनीष सभ्यता सृष्टि हवा कालरू भाषा सृष्टि हवा कालरू अनुवाद मध्य अच्छी अनुवाद चली प्रथम यदि आम देखा भारत कथा भारतर मुख्यतः 3टी भाषा थिला जदि आम 5000 वर्ष तल को चलैबा कि 10,000 वर्ष तल को पलैबा देखिए मुख्यतः प्राय 3टा भाषा थिला गोटे हूँ संस्कृत वैदिक काल रे जो संस्कृत थिला ताको प्री वैदिक कहउची आ गोटे प्राकृत आ गोटे पाली परवर्ती समय रे प्राय 2500 वर्ष तलू यही सब पाली प्राकृत संस्कृत ये अपभ्रंश होकर स्थानीय भाषा सृष्टि है आम ओडिया भाषा सृष्टि है बंगला भाषा सृष्टि है मराठी भाषा सृष्टि है कर्णाटक भाषा सृष्टि है इत्यादि 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 विभिन्न प्रकार ही सृष्टि है यही जो भाषा सब सृष्टि है धरी जो ओडिया भाषा आम करवा ओडिया भाषा सृष्टि है ओडिया भाषा प्रथम कौन कला ओडिया भाषा जो मैंने लिखिले कौन लिखिले ओडिया भाषा जो प्रथम आरंभ हो तार साहित्य लिखागला से साहित्य कौन लिखागला देखिबो से सबु साहित्य केवल ओडिया नुह ओडिया बंगला तेलुगु तमिल जहाँ कह से प्रथम सृष्टि है रामायण महाभारत भागवत जिते सब प्राचीन शास्त्र अच्छी संस्कृत भाषा थिला से संस्कृत भाषार अनुवाद समान करलेनी कोटी अनुवाद है आक्षरिक अनुवाद है कोटी अनुवाद को सामान्य परिवर्तित करी नुआ नुआ कहानी करी सृष्टि है एवं कोटी संपूर्ण रूपे से मूल कहानी की नहीं संपूर्ण मौलिक कहानी मध्य छिड़ा कर दिया गला जमती आम कह सारला दास महाभारत अनुवाद करना अनुसरण कर जो अनुसरण कले ताको अनुसरण करी गोटे नुआ महाभारत लिखिं जदिव महाभारत से चरित्र मान सब अच्छा भर अनेक चरित्र सारला साहित्य ना सारला साहित्य अनेक नुआ चरित्र लिखाई सारला साहित्य अनेक नुआ चरित्र लिखाई आ सारला साहित्य एकदा एत पपुलार थिला एत लोकप्रिय थिला ओडिशा रे जे सारला दासंकर कथा को आम उद्धार करुले आम लोक मैंने सब उद्धार करुले आज भी उद्धार कर लोक जानी ना ये जोटा को मुझे उद्धार करी कहूची सेटा कौटू आसी से लोक भी जानी सेटा हूँ सब बड़ आश्चर्यजनक कथा आम से भूली जाइए धरी नहीं कौन केमती है मुझे कहीदे खाली बुझे दूसरी गोटे 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 उदाहरण दे आम गोटे कथार कहूँ ता संगे लाग ना से टिके कथार चिड़ीज गंगा थिले गंगा कहले थी गांगी कहले जीवी से यही भाया लोक से गांगी कहले पलैब अरे गंगा थिले जीवी गांगी कहले जीवी से कौटे चला से मूल महाभारत ना से सारला महाभारत आसला सारला महाभारत आसला आम पिला को छुआई शुआई पकेला बेले जो गीत गाऊ भूत आसला बोली कहू आम कह बाबना भूत आसो बाबना भूत कौटे अच्छे कौतर लिखाई बाबना भूत कथा मूल लिखाई सारला साहित्य मूल महाभारत संस्कृत महाभारत बाबना भूत कथा ना एमती बहुत कथा देख जमती कि सेटा गोटे अच्छी ये जो टिके कथार कह जाए झिमिटी खेलर महाभारत
ଶୁଣିଥିବ ପିଲେ ଗାଁରେ କହନ୍ତି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଆସିଲା? କେଉଁଠି ଅଛି ଏ କଥା? ଏ ମହାଭାରତର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅଛି। କ'ଣ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କୌରବ 100 ଭାଇ, ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ, ଏମାନେ ଡାଳିମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ। ଡାଳିମାଙ୍କୁଡ଼ ଯେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଲୁଚିବା, ଗଛରେ ଯିବା, ଆଉ ଜଣେ ଗଛକୁ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଜଣେ ହେବ, ସେ ତାକୁ ଯାଇ ଛୁଇଁବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେବେଳେ କୌରବମାନେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଲୁଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏକା ଭୀମ ସେ ଗଛରେ ଯାଇ ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାର ହେଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ତଳେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚୋର ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଖେଳକୁ କୁହାଯାଏ ଝିମିଟି ଖେଳ। ଏଇଟା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକଥା ଆମେ ବି ଏବେ ବି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛୁ ସେ ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ମହାଭାରତ? ସାରଳା ମହାଭାରତ। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଏମିତି, ଆମେ ଯଦି କରିବା ସେ ତ ରାତି ପାଇଯିବ, ସରିବନି, ଏତେ କାହାଣୀ ଅଛି ସେଥିରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭାଷା, ସାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭାଷା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭାଷା ହେଇଛି, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭାଷା ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ୟାକୁ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଷାରେ। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ କଳା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ। ଅନୁବାଦ କଳା ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅନୁବାଦ କଳା ଅଛି, ଆମେ ଅନୁବାଦ କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ସେ ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଥିଓରି କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବା ମଧ୍ୟଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁବାଦକ କିଏ ଥାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ଅନୁବାଦ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ମୂଳ ଭାଗବତକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ଏତେ ଚମତ୍କାର ଓଡ଼ିଆରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ମୂଳ ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ କ୍ରିଏସନ୍, ତାର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରଚନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ଭାଗବତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମହାଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଆହୁରି ମଧୁର ହେଇଛି, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ଭୂଷିତ ହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ କେତେ ପୁରୁଣା ଏବଂ କେମିତି ଆମର ରକ୍ତେ ରକ୍ତେ ଅଛି, ଆମ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଅନୁବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଆମ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ସେଠି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖାହେଇଛି, ପୂଜା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କେଉଁ ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିଲେ? ଥିଓରି ପଢ଼ିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କାଳର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟେଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲାବେଳେ କେତେ 50-52 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 52 ଇୟର୍ସ। 52 ଇୟର୍ସ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବି ନଥିଲା। ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ 100 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିଛି ମାର୍କ ଥିଲା, 30-40 ମାର୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆସୁଥିଲା ଅନୁବାଦ କଳା ଉପରେ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେମିତି ଅନୁବାଦ କଳା ବା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଜି ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର, ସେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ତାର ଚାଲିଛି, ତିଆରି ଚାଲିଛି।
ଏବେ जो नुआ वर्ष आसीबो से नुआ वर्ष रे अनुवाद साहित्य ऊपर मध्य एडमिशन हबो कोडा ओडिया यूनिवर्सिटी हमर जो चलची तैयारी हेकि वर्तमान 4-5 वर्ष वाली कार्य करूची तेणु अनुवाद साहित्य को आम जाना दरकार ये अनुवाद साहित्य को जब आम जाना बा अनुवाद कला को जब आम साधन करें आम गोटे भाषार साहित्य को अन्य भाषा अनुवादित कर पहुँचे पार तेणु अनुवाद कला कौन हम ना दीटा साहित्य भितर दीटा सभ्यता भितर दीटा संस्कृति भितर दीटा लोक मान भितर दुई वर्गर लोक मान भितर से गोटे ब्रिज भाया काम कर जोटा कहगला सार ताको व्याख्या करुले भोकाल फॉर लोकाल नरेंद्र मोदी ये कथाटा ये स्लोगानटा आरंभ कर से भोकाल फॉर लोकाल जो कहते से मुख्यतः अर्थनैतिक पॉइंट दृष्टि अर्थनैतिक आभिमुख्य को आखि आगे रखी से आमर जो लोकल प्रोडक्ट से केमती बाजार बिक्री हम तार केमती इंटरनेशनल मार्केट को जीव बाहर को केमती जीव तापे आम प्रयास करवा उचित ठीक सही भाया आम लिटरेचर आमर लोकल प्रोडक्ट आम लिटरेचर आमर लोकल प्रोडक्ट से लोकल प्रोडक्ट बाहर को जीवा दरकार आम साहित्य बाहर को जीवा दरकार आम साहित्य यदि बाहर को न जीव ताले आम साहित्य को लोक मैंने जानीपर ना अनुवाद साहित्यर पोजिशन कौन तार स्टेटस कौन से विषय सार गोटे उदाहरण देले गोटे कहले प्रकाशित साहित्यर मात्र 2.3 भाग अनुवाद साहित्य प्रकाश पाउथिबा साहित्य को आम जदि 100 बोली धरिबा तार अनुवाद होची केते 2.3% मात्र 2.3 भाग तेणु या बढ़ाया पड़ो 100टा बही 2टा बही एमती कहले भी पिला भल भाई बुझे तेणु या पढ़ाया पड़ो या बढ़ेवा पड़ो कारण आम जदि बढ़ेवा पारिबा नाई ताहले इंग्राजी रे को प्रकार अमूल्य संपद साहित्य सृष्टि कराई फरासी भाषा कौन सृष्टि कराई जर्मन भाषा कौन है जापान भाषा कौन है चीन भाषा कौन है हम जापर यहाँ सरकार कर्तव्य हवा उचित यहाँ सरकार कर्तव्य हवा उचित आम जानवे केवल गोटे देशर सरकार जे कि अनुवाद साहित्य उपर गुरुत्व दौला एवं तार सबुजाक साहित्य को से स्वतंत्र भाव अनुवाद मान को रखी ताको प्रकाश करुला से हूँ रूस देश जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोविएट सोशलिस्टिक रिपब्लिक ऑफ सोविएट यूनियन थिला सेते बेले रूस भाषा रे स्वतंत्र भाव अनुवाद करने पाई एक ऑफिस खोलाई थिला एक कार्यालय खोलाई थिला सेठी लोक मान नियुक्ति पाउथिले एवं सेथिरे मध्य आमर जड़े ओडिशा रु जाइकरी वैष्णव चरण परिडा जे पार्लियामेंट मेंबर थिले फेरी आसिबा परे से वैष्णव चरण परिडा सेठी चाकरी करथिले तांकर कार्य थिला केवल गोटे कथा दिन राति 24 घंटा से केवल रशियन लिटरेचर को ओडिया रे अनुवाद करिवे आज देख आज अति कम 100टा वॉल्यूम बाहर 100 प्रकार एडिकेडिक बही सब 100टा बाहर गोटे नुड़ी 100टा जहाँ को वैष्णव परिडा ही अनुवाद करछन्ते एवं रशियन लिटरेचर से ओडिया लिटरेचर होइछ खाली ओडिया लिटरेचर नुह भारतर सबू भाषा से अनुवाद करछन्ते तेणु रूसर जो साहित्य रूस भाषा जो रचित साहित्य से वर्तमान सारा पृथ्वी रे सबू भाषा रे अनुवादित ही सरी आम ओडिया सरकार करवा उचित ना ओडिया सरकार करवा उचित ओडिया सरकार ओडिशा रे जो खूब उच्च कोटीर साहित्य सृष्टि करा जाइछि जमती सार कहते ही इज ए ग्रेट सन ऑफ ए ग्रेट मदर विद्युत प्रभा देवी अति सुंदर साहित्य सृष्टि कर कल्पना करें साहित्य न पढ़िले से साहित्य अनेक परिमाण रे बड़ बड़ जो मैंने प्रतिष्ठित कवि से साहित्य को अतिक्रांत अतिक्रमण कर सुंदर साहित्य सृष्टि कर आम पिला माने जानी ना कारण टेक्स्ट बही कौन कविता एपर्यंत स्थानित ही नहीं जहाँ फल आम विद्युत प्रभा देवी को जानूना
तेणु सरकार मध्य दिगरे आगे आसा उचित सरकार मध्य अनुवाद साहित्य सृष्टि करिया ओडिया को अन्य भाषार अनुवाद करिवे एथिपाई प्रयास करबा उचित एवं ओडिया साहित्यर जो उच्चांग साहित्य अच्छी से सबू साहित्यर अनुवाद ही बाहर को जावा उचित एभली कि मो सम्मुख जो सार बसचंती तुम पढ़ीचन ना पिले सार को डॉक्टर रामचंद्र बेहरा का गल्प तुम तो गल्प न से केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई तुम न पढ़ीच ताल तुम हूँ हतभागा एवं हतभागिनी अरे पढ़ ये सार को बही मार्केट रू किणिक पढ़ चमत्कार गल्प ना से केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार तो कौन मिछर मिलला केन्द्र साहित्य अकाडेमी केमी पुरस्कार देला भारत वर्ष जिते लेखक अच्छा ता भर से विभाग से वर्ष से श्रेष्ठ तेणु श्रेष्ठ हेले बोली तो पाइले ना कि आम आमर पाखरे थिबा सार को मध्य जानिने सार को गल्प को मध्य जानिने तांका गल्प अन्य भाषार अनुवादित हो अन्य लोक जानिले आम किंतु जानिने तेणु तांका भाषा पढ़ तांका लेखा पढ़ तेणु सार को लेखा मध्य अनुवाद सरकार दायित्व नवा उचित ताकू इंग्राजी रे ट्रांसलेट करके इंग्लैंड पठेबा उचित इंग्लैंड लोक मैंने जानतु जे सार कौ भाया गल्प लिखिं खाली आम तांकरी गल्प पढ़ुतु से आम गल्प पढ़े ना सेमती हेनी एटा 2 वे सिस्टम हम आम साहित्य पढ़ू सी आम साहित्य पढ़ तेणु आज ये दिगरे जो उद्यम कर मोर यार शुभकामना करुच्ची एटी सफल आलोचना हो एवं यही आलोचना को केंद्र करी यही आलोचनार माध्यम आमर किसी अध्यापक बा किसी पिला चेष्टा करंतु आम भाषार गोटे बही को अन्य भाषार अनुवाद करेंगे कि अन्य गोटे भाषा को आम ओडियार अनुवाद करेंगे जो मैंने बंगला जानी हिंदी जानी हिंदी बहीटा तो सहजरे अनुवाद कर ना कर मु गला 12 वर्ष धरी हिंदी रू अनुवाद कर आसुची फॉर लास्ट 12 इयर्स किंतु मु कौ साहित्य अनुवाद करू नहीं मु केवल अनुवाद करुच्ची प्रधानमंत्री मोदी को भाषण एवं अमित शाह को भाषण कारण जो मैगजीन कहगला जार मो मुख्य अच्छी संपादक से केवल मोदी भाषण अमित शाह को भाषण छड़ा किसी बाहर नहीं जहाँ बाहर से हूँ केंद्र सरकार कार्यक्रम एवं आम नुआ सरकार गढ़ीचु आम नुआ सरकार गढ़ीचु ये तेणु नुआ सरकार कथा किसी एवं बाहर तेणु आउ थे एभली एक सारस्वत मध्याह्न मत अनुवाद विषय किसी कह सुजोग दे मु प्रिंसिपाल महोदय को धन्यवाद जनाऊँगी आउ सेमिनार चार्ज जे वर्तमान सार तो कहीदे मोर कन्या मो झी है ताको धन्यवाद जनाऊँगी आ सबू सार मान धन्यवाद जनाऊँगी सब जिते सार अच्छे समस्त को धन्यवाद जनाऊँ मो आगे मतलब मनोरंजन सार बस धन्यवाद जनाऊँ आ तुम पिला माने समस्त को धन्यवाद जनाऊँ आ अनुरोध करुच्ची किसी गोटे कर डू समथिंग चुपचाप भाषण शुणिक पढ़ाओ नहीं चेष्टा कर तुम चाहिए सब कर यस आई कैन डू जदि यही भाया गोटे मेंटालिटी तुम निज भितर रख यस आई कैन डू निश्चित भाव यू कैन डू तेणु मुझे शुभेच्छा जनाऊँगी तुम्हें भी जड़े जड़े अनुवादक हो ओडिया भाषा को विश्व दरबार में पहुँचाओ एवं विश्वर विशिष्ट साहित्यकार मान कथा को ओडिया भाषा में पहुँचाओ यही शुभेच्छा जन मोर वक्तव्य सांग करुच्ची धन्यवाद। Thank you, Professor Malik. Your words would definitely go with us for a long time after your speech. The Reverend Chief Speaker also began his address in Odia, powerfully affirming the importance of the mother tongue. He traced the emergence of different Indian languages and highlighted the fundamental role of translation in this process, citing the Ramayana and the Mahabharata as among the earliest translation works that shaped regional literary cultures. He critically questioned
the supremacy of English and emphasized that all languages in the world are equally significant. Stressing that language precedes the nation, he observed that national identities are formed and named through language. He further underscored the urgent need for more translation work, citing Russia as the leading example with the highest volumes of translation in global. Importantly, I would like to add, because you representing the power of this state, of this nation, I would like to add that the higher education text must be first made available in local languages if the mother tongue is to be genuinely valued and sustained. That's my plea from the intellectual mind present here. Thank you very much for this illuminating session. Now we are on time. Thank you very much for all the speakers. We are genuinely on time, and that's a good sign. So it's time to release the souvenir. We in fact have got 32 scholarly papers for this seminar, and those have been compiled in our book, and this is the time to release the book. I request all the eminent guests to take the pain of standing and release the book. This book carries 32 scholarly abstracts along with some important messages of the power bearers of the state that Dr. Purvasa has taken the pain to collect it with her hard work. She, in fact, in the meantime, she was running to collect the messages. I could know that, that's why I'm saying. So thank you very much for having these beautiful messages from all those power bearers of this nation. And I also would like to request Professor Ramachandra Behera if he could take a little pain to come to the dais and be with us on this moment so that we could frame with you the book. Could you please, you can beat me later. I'll show you my back. You can do whatever you like if you don't mind, please, sir. Could you please take the pain? And I also would like to request Professor Saroj Mahananda, who is very much present here. Sir, I'm ready. Whenever you say, I'll take the appointment and I'll go to you. I'll show my back and you again also. Please, please, I take my pardon to request you. Kindly join us on the stage. And also Major Manoranjan Mahanti, sir. Professor Tapan Pati and Shimi madam. Madam, please join us. It will be a great pleasure with you, having you on the stage. You have taken all the pain to come here. We won't let you go without having a frame with a souvenir. We kindly request everyone to join us on stage. Volunteers, I request somebody to go and escort our principal, sir. We don't want to miss him. This is a very important occasion. We want him on the stage right now. Volunteers, some of you could please go and escort him. Some of you please hurriedly go and escort him. We need to take a little pause. We don't want to miss the important person on this occasion. We would very much like to be him on the frame while releasing the souvenir. And I hope our students would come much earlier. We are waiting for you, Principal Sir. We don't want to miss you this occasion. We would very much like to include you in the photo frame while releasing the souvenir. Our Principal Sir, he is approaching to the dais. I request him to join us on the dais.
grand success. Thank you very much, everyone. I take it great pleasure when Ramachandra Behera sir is turning the pages and looking at the souvenir. I take the great pleasure of looking at him, watching after it. Thank you very much. Yeah, he in fact told me before coming here that I would just sit in the audience. You would never ask me anything to do. I take my pardon that I pressurized him to come on the dais. But what could I do, sir? I cannot frame this moment without you. Thank you very much. I'd like to request all our guests to kindly take their seat. We still have a few moments to call it a day for the session. Our guests are requested to kindly take their seat. Well, all the important speech and address of the session is over, but something very important is waiting for us. We express our heartfelt gratitude to all our eminent intellectual minds for accepting our invitation and gracing the occasion with an inspiring presence. Your words and example have sown seeds of thought that will continue to grow long after today. May the light you have shared today continue to guide us in all our endeavors. Well, no academic gathering is complete without acknowledging the collective effort and goodwill behind it. So at this juncture, we take the moment to express our heartfelt thanks. May I now invite Madam Sujata Sorangi, she is from the Department of English, to deliver a formal vote of thanks, without which the effort would be incomplete. So, Madam, I request you to present a formal vote of thanks. Good afternoon, everybody. Respected Principal Sir, respected guest of honor, Dr. Sachidanand Mohanty Sir, respected our Chief Speaker, Professor Purnachandra Malik Sir, our RUSA Coordinator Ranjit Sir, Head of the Department Dr. Purbasa Priyadarshini Madam, Mr. Achindananda Maharana Sir, Dr. Prabhamoyi Samantray, and Professor Manoranjan Mohanty Sir, Tapan Sir, Dr. Ramachandra Behera Sir, Smita Madam, and all the distinguished guests, those who are present on the dais and off the dais. I really feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on the special occasion of our two-day national seminar on the topic Vocal for Local, Reimagining Literature and Translation in the 21st Century. First of all, I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all the program advisory committee members and the invited speakers. Words are not enough to thank their constant guidance and their support to save the conference and to make the conference a successful one. On the behalf of our Department of English, I convey deep regards and a hearty thanks to our Principal Sir, the patron of this college, Professor Shantanu Kumar Jena Sir, for his constant support and guidance to make this event a successful one. Then I would like to thank our beloved Head of the Department, Dr. Purbasa Priyadarshini Madam, for her constant help and guidance that radiated a kind of source energy within us to make this event a successful one. My heartfelt thanks to our Dr. Dipti Roy Madam, IQSC Coordinator,
the head of the Department of Economics of Kendrapada Autonomous College, for being here with us today and giving us her valuable time. I also thank to to Mr. Achyutananda Maharana sir, lecturer of English, Department of English, Kendrapada Autonomous College, for his wonderful guest introduction. I would also like to express my appreciation for Mr. Ranjit Kumar Das sir, who is the coordinator of RUSA and IDP, Reader in Physics, Kendrapada Autonomous College, for supporting us to make this event a successful one. And I express my gratitude for Professor Purnachandra Malik sir, who is the chief guest, who is the chief editor of the journal. The journal name is BJP Bharat, and who is also the former professor of the Government College Bargarh. And sir talked about your Sarala Sahitya, and sir also talked about how to promote our Odia literature in the worldwide and in the national and global sphere. Sir also talked about, I think that sir's speech most create a kind of interest and encourage our student to read Odia literature. Sir, your speech was really very thought-provoking and it really made us think, sir. Thank you so much, sir, for such a wonderful speech. I would also like to thank Dr. Sachidananda Mohanty, sir, who is the member of UGC National Fellowship and former VC of your Central University, Koraput, Odisha, and former head of the Department of English of Hyderabad University. As Purnachandra sir had already told that sir is the greatest son of the greatest writer, greatest mother. And your speech was truly inspiring, sir. It kept us spellbound and it inspired us, and I am sure a lot of things is going to come after that speech. I express my gratitude for such an inspiring speech, sir. Then I would like to thank to all the delegates present here, to all the students, all my dear students, and all the former and our retired faculty members, and all the non-teaching staffs, like your Dr. Ramachandra Brehera sir, who is a very prolific writer, and our Manoranjan Mohanty sir, who was also the former head of the Department of English, our Kendrapada Autonomous College, and Tapan sir, who was also the former faculty of History Department of this college, and Smita madam and Saroj Mahananda sir. Particularly, I would like to thank to Dr. Prabhamai Samantrai for her cooperation. My sincere thanks to also all the sponsoring committees like NALCO and your Odisha Sahitya Day Academy. In conclusion, I would like to say that this event would not have been possible without the support and hard work of each and everyone, those who are present here. I would like to acknowledge and appreciate everyone who tirelessly worked behind the stage in making this event a successful one. Lastly, but importantly, I would like to thank all of you for being present here and giving your valuable time and making this event a very successful one and making this event a memorable one. Thank you all, everyone, once again. Ladies and gentlemen, I now invite and request our respected guests, participants, speakers, media persons, students, and all the staff members of this prestigious institution to join us for lunch as this inaugural session is over. We request you to kindly be back by 2:30, sharp 2:30, as we resume with our technical session with promises equally engaging discussions. So everybody, please kindly join us for lunch.